हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे हैक्स के बारे में, क्योंकि हमारे साथ में एक ऐसी कंपनी के फाउंडर है जो कि इन हैक्स को पता लगाते हैं और इन हैक्स को सॉल्व करते हैं। Hey, hi. My name is Rahul. I'm the founder, CEO of CloudSEK. We're a cybersecurity company which monitors any sort of threats or hacks that can impact an organization. And I'm here to tell you the top 5 ways that you could get hacked. Okay. Can you tell me something about your company? So we are a 7-year-old company. I'm a college dropout. I quit my engineering to pursue my passion for cybersecurity. Worked for a bunch of startups before founding the company myself. Been an invited speaker to almost 22 plus countries. Was part of RBI's Digital Indian Committee. And here, it's been 7 years building the company. At the company, what we do is our technology and team constantly monitor any cyber security events or incidents that can impact our customers. So if there's a new way to hack your computers, your phone, your critical infrastructure, we would know about that and we inform you about it proactively. So what is your journey? How this idea came in your mind that we will do cybersecurity? When I quit my college and I was working for a startup, I kept publishing white papers on the internet and cybersecurity. I kept writing about them, which got me a lot of invited to international conferences. So I traveled to almost 22 plus countries between 2010 to 2015. So every country I go to, there's a conference booth. A conference booth has always, and I go visit the conference booth to understand what they do. And one of the interesting things I found in the conference booth is that the companies are founded in the US, UK, Israel, but there's always an Indian guy standing in the booth or an Asian guy standing in the booth, which made me think, why would need people to leave the country to build great companies? Why can't they do it from here? So I quit my last job, which was at Citrix, and I thought of building a great technology company, building a great product and selling it to the world. अपने स्टोरी पे वापसी आते हैं। हम बात करेंगे 5 बड़े हैक्स के बारे में जो इनकी कंपनी में पता लगा है। By the way, what is your clientele in India right now? Yeah, so everything. I know, the minute you wake up, you read a newspaper. Hindustan Times would be your customer. You brush your teeth with a particular toothpaste and toothbrush. They would be our customer. You take a cab to your office on Ola. Ola would be our customer. You make a payment, to the cab driver using Paytm would be our customer. Basically, every vertical of where technology. So how you are helping Colgate via cybersecurity? For instance, right, a lot of things which is happening, a lot of cybersecurity threats are targeted at the consumers. For instance, there are a lot of fake websites and fake brands which is put up online, which they say that I'm going to bulk sell this particular product. And where they say that you can buy a cheaper and a bulk version of, it could be a shampoo, it could be a toothpaste, etc., etc. But there all will be fake websites trying to infringe the original one. What we do is we monitor the internet and try to see if, one of the things we do is try to see if these infringements are there, which can actually be a threat to the revenue of the company. So how can you track? Basically, I run an e-commerce store. Yeah. I am selling Colgate. How can you track I am selling original or a copyrighted one? Yeah. So we primarily look at the websites, which is used. For example, today someone would have put up Colgate23.com or Colgate free22.com. These are what is often put up by scamsters. So we have a list of what is right and what is wrong, which is what the machine learning technology does, which is used to identify that, well, this is bad and this is good. Okay, so basically you are tracking domain name only. Yes, that's how in the case of domains which we do. Okay. Also the company will provide you some data that these are our registered partners or distributors or... Yes, some sort of information we do get from the customer. That's how we configure the tool. A lot of information gets compiled or pulled from the internet itself about the public information which is available about Colgate. So the digital footprint is automatically built, and then a customer gives some information, correlate these two things, and then use a machine learning system to predict what is wrong and what is bad. So earlier you were telling me you are going to hack my WhatsApp account. Yeah. So this is some of the things which I'm talking today are not the
the most sophisticated attacks at all. These are the least sophisticated attacks, but it works in order to get a poor guy's accounts hacked. One of the techniques is very simple. The attacker calls you, or he has just access to your phone. In most cases, he don't have access to your phone. All he would need is you to make one phone call, one outgoing phone call. And the call doesn't even need to get answered. And within seconds, your WhatsApp will get logged out and the attacker will have complete access to your WhatsApp. Now what is happening is, the call which you made is the service code used to activate call forwarding on your phone. Now the minute you have, and the bad guy will force you to call forward your phone to his number when your phone is busy, which means all he has to do is make your phone busy and then initiate a WhatsApp registration on another device and then send the OTP via a phone call. Now when the phone call comes to your phone, the service provider redirects it to the attacker's phone and he gets the OTP and he is able to log in. This I can do if you give me the phone for a minute as well. This I can do by convincing you to dialing a number as well. Different ways this can be achieved. But works well. तो मैं हिंदी में बताता हूँ क्या कर रहा है. तो बेसिकली हैकर्स क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, या फिर आप जैसे लोग भी जिनको नॉलेज भी है, तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं और आपको कन्विंस कर रहे हैं कि हमने कोई ऑफर निकाला है, ये किया है, प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल करें. इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे. एक मिस कॉल जाएगी और कुछ नहीं होगा. तो बेसिकली आप उस नंबर पे कॉल करते हो, वो कुछ नहीं है, वो एक सर्विस कोड है जिसकी वजह से आपकी जितनी भी कॉल्स है, अगर आप वेटिंग पे जाते हो तो डाइवर्ट हो जाएगी वो किसी और नंबर पे. अब यहाँ पे क्या करेंगे हैकर्स, यहाँ पे वो व्हाट्सएप रजिस्टर करेंगे आपके फ़ोन से, आपका नंबर भर के. अब वहाँ पे OTP फ़ोन से नहीं मंगवाएंगे, SMS पे नहीं मंगवाएंगे, वो कहेंगे कॉल करो. तो कॉल के ऊपर जब आ रहा होगा, जैसी कॉल इनिशिएट करनी होगी वैसे वो आपको कॉल कर देंगे. आपका नंबर बिजी हो गया. आपका नंबर बिजी होने की वजह से अब जो कॉल आएगी व्हाट्सएप के थ्रू वो उनके नंबर पे आएगी और वो नंबर भर के आपका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं. और ये बहुत ही आसान ट्रिक है और किसी के साथ भी हो सकता है. तो बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिली है हमको एक हैक के बारे में जिससे हम बच सकते हैं. सो व्हाट इज द सेकंड हैक? A lot of mobile apps. Can you also share the hack code? क्या लिखना है? Yeah, absolutely. I mean, it is *67* and the phone number. That's it. Okay. Yeah, that the call will get reverted. और वार्निंग है भाई, प्लीज हैक नहीं करना है. हम सिर्फ बता रहे हैं, पहले ही बता रहा हूँ मैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं. चीज ये जो शक्तियां मिल रही है आपको, इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है. ओके. सो व्हाट इज द सेकंड हैक? A lot of mobile apps, when you search on the internet and you search for X company's app on a third-party app store, not on Google Play Store, because there are so many app stores where you get free apps, free games, etc., etc. Don't trust all those apps. Many of those apps will have a malware which will have access to your sensitive information. It could be your images, it could be some saved data, it could be your contacts, it could be anything. But when you go try to get those free apps, many of those apps will not be the legitimate ones and have some malware embedded in it. And that's how a lot of people's phones are getting hacked. आपने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, मेरा फोन हैक करे, फोटोज ही नहीं है कुछ, क्या कर लोगे आप? I can use, if I have access to your phone, like, and if your phone is rooted and if I have complete access to your phone, I could use your phone to register UPI. And I have access to your UPI transactions as well in that case, which will need two levels, by the way. First, I need to get an app on your phone. From there, I need to elevate my privileges. Once I elevate my privileges, I have complete control of your phone, which will enable me access to all your banking. Because with a phone number is where your banking is connected. Okay. I can read pretty much everything. ठीक है. So suppose if my phone is not rooted, then? Rooted, if it's not rooted, there are certain scenarios in which one app can read other apps' data, but it is not as critical as unrooted ones. So most gamers, what they do is, in order to get the free games or free things, they root their phone. And it becomes very dangerous. दूसरा ही वार्निंग, हिंदी में समझा रहा हूँ. आजकल बहुत सारे ऐप स्टोर बने हुए हैं जहाँ पे आपको पेड वाली ऐप्स फ्री में मिलती है. आप गूगल पे सर्च मारते हो और उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो.
कोई आपको फ्री में क्यों दे रहा है, इस चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करो। आपके फ़ोन के अंदर वो मालवेयर डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोन के एक्सेस ले पा रहे हैं, वो आपका कॉन्टैक्ट, फ़ोटो सब कुछ ले सकते हैं। और बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, मेरी रिश्तेदारी, मेरा भाई भी अपना फ़ोन रूट करके रखता है। उसको लगता है कि रूट करने से प्रिविलेजेस खुल जाती है, आप बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स खोल सकते हो फ़ोन के, पर आप एक डोर भी खोल रहे हो हैकर्स के लिए अपने फ़ोन के अंदर। जैसा इन्होंने बताया, अगर आपने रूट किया हुआ है प्लस आपने ऐसी ऐप यूज़ करी, तो हैकर अगर चाहे तो उसका मिसयूज़ करके आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपया एक ट्रांजेक्शन पे हो गया अभी, और बहुत जल्दी पैसा खत्म हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लर्निंग हमको ये मिल रही है कि हमको हैकर से अगर बचना है, आपको हैक करवाना है तो हमको कोई इशू नहीं है। अगर हैकर से आपको बचना है तो आपको ये जो उल्टी सीधी ऐप्स होती है वो इंस्टॉल नहीं करनी है, साथ में आपको रूट नहीं करना है, या फिर आप आईफोन ले लो, है ना। यू हैव टू सेल योर किडनी बट यू कैन बाय आईफोन। Yeah, and another thing, just to add, there are a lot of loan apps where you can search online for loan apps, and you install the app, you can get instant 10,000 rupees or 7,000 rupees for a interest. And some of these loan apps are genuine, but a percentage of them are not genuine. So what they do is, if they default, if you don't pay that 10,000 rupees with 3,000 interest back, the time you register the loan app, they would have taken all your images from your gallery, all the contacts from your gallery as well. The minute you default, they start creating WhatsApp groups with the contacts, and they'll find or close friends or close family members, sister, brother, etc., etc. Then they start morphing these images which they have downloaded from your phone, claiming that you are a fraud, you are a lot of abusive things. And they try to defame you and harass you to pull that money out. So when you install loan apps, make sure that you are actually going after a authentic branded loan app. How to know it's authentic or branded? The RBI has published a list of authenticated, valid lending company names. You can follow that, or you can again go with a trusted, credible brand name, is what I would say. A lot of incidents have came where especially this is a targeted female, where their images were morphed and they were pictured as a as a bad character among their family members, etc., etc. So basically इन्होंने बताया जो आजकल ऐप्स चल रही है, जिसके बारे में मैंने भी बहुत बार बात करी है कि बहुत सारी ऐप्स आ गई है प्ले स्टोर के ऊपर जो कि आपको लोन देती है, और आपको एक इंस्टेंट लोन देती है कि आपने कुछ किया, आपको सीधा 7,000 10,000 रुपये का लोन दे दिया। बहुत सारे लोग उसका यूज़ करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स की सारी डिटेल लेते हैं वो, आपकी इमेजेस भी सारी की सारी वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उस इमेजेस का मिसयूज़ कर सकते हैं, उसको एडिट करके गलत तरीके से आपकी फैमिली मेम्बर्स को दिखा के आपको हैरेस कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं पैसा दो। और जिनको नहीं पता वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। आपको 7 दिन के लिए तो कहेंगे हम आपको फ्री में दे रहे हैं, पर 8वें दिन वो आपको कहेंगे मैं तुमसे 30% लूँगा कितना भी, और आपको करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, दूसरी ऐप लोगे जो कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और आप इस ट्रैप में फंस के रह जाओगे। तो ये कच्चे लालच, छोटे लालच को छोड़ दो। We have a free software service called bvigil.com, where you can go search the name of any app and it will give you the security score of that app, whether it's secure or not secure, and it's free, by the way. Okay. It's given for the community. It's called bvigil, bevigil.com. So you're tracking every app, और We have almost 1 million apps which we are tracking to see whether they're good or bad. हमारी ऐप की भी रेटिंग जल्दी करवा दूंगा मैं। What is the third hack? Anytime you want to make a call to a customer care, right, and you didn't get your food, you didn't get your refund or whatever, first time you search customer care of the following bank or the customer care of this following service, the first few numbers that will come up might be the wrong customer care number. But when you call those numbers, they'll pretend to be like an IVR, a voice speaking, acting like a genuine customer care number. But now that you made the call, you will think you're actually talking to a customer care number, but it's actually the scamster who has put those numbers. The intention is make you believe that he or she is a customer care executive, then hack your phone or hack your bank account by convincing you to do a series of steps. A lot of people lose money this way. Tons of people, thousands of rupees every day, not thousands, lakhs of rupees every day by this very simple
scam or hack. इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। जिनको नहीं पता, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरे पास में बहुत सारे लोग एड्स चलवाने के लिए आते हैं। तो इन्होंने कुछ हैकर्स के बारे में बात करी है। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च मारते हो इंटरनेट के ऊपर, आपको जो वेबसाइट्स दिखाई देती है टॉप पे, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल साइट्स हो। तो आप क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो, वहीं पे जो नंबर दिया होता है उस पर कॉल करते हो, उसके बाद आपको जो वो कहते हैं आप उनको बताते रहते हो, वो आपसे सारी डिटेल्स ले लेते हैं। तो मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम मना कर देते हैं, और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कोई क्रिप्टो ऐप है, उस क्रिप्टो ऐप के वॉलेट के सपोर्ट का मुझे रैंक करा दो। उस क्रिप्टो ऐप में कोई सर्च मारे तो मैं आऊँ, ऐड से ले आओ, चाहे आप गूगल से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, मैं आपको पर लीड इतने रुपए दूंगा। तो पहले तो जब पहली बार मेरे पास क्लाइंट आया तो मुझे लगा उनके पास सपोर्ट का काम है, वो सोच रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि टेक सपोर्ट भी गलत तरीके से होता है, पर जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरा कंप्यूटर खराब है, मैं सर्च मार रहा हूँ मेरा कंप्यूटर खराब है, मुझे बहुत सारे लोगों के नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगा वो ऐसी चीज़ है। पर जब मेरे को डिटेल में समझ में आया चीज़ करते क्या है वो लोग, आपको मैंने एज अ मेरे जैसे डिजिटल मार्केटर ने, जिसको नहीं पता था उसने गलती से कर दिया, या कोई अनएथिकल बंदा था उसने कर दिया, उनके पास में लीड गई, वो बात करेंगे। अब किसी क्रिप्टो अकाउंट से बात करेंगे, कैश ऐप करके एक नाम है, बहुत पैसा मिलता है इस पे एक लीड का। अगेन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो एक लीड का बहुत पैसा मुझे ऑफर किया गया है कैश ऐप के लिए, अभी 6-8 महीने की बात बता रहा हूँ, बहुत पुराना नहीं बता रहा। तो आप क्या करते हो, आप किसी को प्रॉब्लम आ रही है यूएस के अंदर, उसने सर्च मारा, सपोर्ट पे कॉल गया, उसने उसके अकाउंट के पासवर्ड ले लिए और वो सारा का सारा क्रिप्टो वॉलेट खाली कर दिया। अभी क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है तो वो ट्रैक भी नहीं हो रहा है। तो ये मतलब बहुत सारे बवाल चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इन चीज़ों से बच के रहो। अब सपोर्ट का यूज़ कैसे कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ सपोर्ट होता है, उनकी ऐप है उसके अंदर सपोर्ट होता है। अब थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए ऊपर डोमेन नेम लिखा होता है, उस डोमेन नेम को ट्रैक करो। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बताया, डोमेन नेम फिशी नहीं होने चाहिए। डू यू हैव एनी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर to track the fishy domain names? It's very difficult. A lot of websites which gets registered will be fraudulent itself, right? Anyone can go register www.bank and then put a bank2.com, or instead of replacing I of ICICI Bank with one, which will look and then put a ICICI website. In fact, very recently we found that a lot of EV, electric motor vehicle, people were searching and trying to find actual EV companies and to get a dealership so that they can have an EV vehicle dealership in their state or a city. But what the bad guys were doing was they were registering domains which looked very similar to the company name but put one or two extra. Can you share the name of the company? We have resolved tons of this incidents for Ola itself. Any brand you take in EV, the bad guys were picking up top EV manufacturers, then creating fake websites and then using Google ads to make it on top of the search results. So anyone who searches for EV company name dealership, the ad will show the fake domain. So the first result, you click the first result, and then they say that we are the dealership, we need 50,000 rupees to 3-4 lakhs rupees for the dealership, and then people send the money and then they vanish. We have tracked at least 6 to 7 crores of rupees lost this way by creating fake domains, using Google ads to bring on top of the search result, and scamming. You need to be very careful. Only when you lose money, it'll be painful, right? Is there an easy way? Because they are very smart in making it look very identical, etc., etc. Which is why I would say, go to their social media page, make sure that's a verified social media page. And on the verified social media page, if there is a website pointing, go there. If there's no verification on the social media, that will also could be created by the bad guys. And CloudSEK monitors, fake websites, fake social media pages, fake domains, fake customer care number, all these things together. And we know on an everyday basis, hundreds and thousands of such entities gets registered. You're publishing that data? A good number of them we publish. We publish and we take them down also. So a lot of work we do kind of stops people from getting their money lost. But still many get through. But as a business point of view, this is a cost for you.
So why you are doing this? One of these companies are our customer. The takedown, we do it for them, like removing it and detection and reporting and takedown. But if someone is not our customer, when we have bandwidth, we do report. But it's very difficult for us to do it for everyone in the world. ठीक है, मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ हुई है. ओला जैसी कंपनियाँ, जो भी बड़ी ईवी कंपनीज थी, जो हैकर्स थे, वो अगेन गूगल एड्स चला रहे थे और यहाँ पे कीवर्ड टारगेट किया जा रहा था डीलरशिप के लिए, और डीलरशिप के वो 50,000 रुपये लोगों से ले रहे थे. बहुत करोड़ों रुपया लोगों से लूटा गया इसी नाम के ऊपर. तो इन्होंने बताया कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पेज चेक करना है. अगर वो वेरीफाइड है, वहाँ से उस वेबसाइट पे विजिट करो, सेफ रहोगे. अगर वो भी वेरीफाइड नहीं है तो अवॉइड करो. वो भी हो सकता है कि उस पेज को भी किसी फेक ने बनाया हो. बाकी जो हमारा इंस्टाग्राम है वो फेक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना. सो देयर इज़ वन मोर हैक. Amazon, you know, Amazon email. Yeah. So basically क्या होता है, डिजिटल मार्केटर बता रहा हूँ, एज अ डिजिटल मार्केटर बता रहा हूँ, ये भी काम हमारे पास आया है. आपके पास एक मेल आएगा. ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास में लिखा हुआ आएगा कि हमने आपके लिए LG का ये टीवी ऑर्डर कर दिया है, ये कल तक आपको डिलीवर हो जाएगा. अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो इस कस्टमर नंबर पे कॉल करो. और वो एकदम आइडेंटिकल अमेजोन का ईमेल होता है. आपको लगेगा ये क्या है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, अगेन वही फ्रॉड एक्टिविटी चलेगी और आपसे सारे आपके एक्सेस लेके सारा काम कर दिया जाएगा. तो यहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं हैकर्स, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया. The last one is ransomware. Every time you have a computer mostly and you want to download a free software, a pirated software, the bad guys can inject a ransomware, and a ransomware is a kind of virus whose job is, once it's on your computer, it makes all your files encrypted or unusable, and then they'll ask you to pay money to retrieve those data. And in case of corporates, they publish the data online if you don't pay them. So it's important and very careful the kind of softwares you install on your computer if you're a computer user. We have had multiple reports published on many different kind of ransomwares, both affecting individuals as well as corporate entities. So that's the last one. ठीक है, तो रैंसमवेयर बॉट नाम सुना होगा आपने. रैंसमवेयर बेसिकली आपने अगेन कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर एक वायरस आ गया जो कि आपकी सारी फाइलों को इंक्रिप्ट कर रहा है, और उसके बाद अगर आपको उसको डिक्रिप्ट कराना है, मतलब उसको अनलॉक कराना है, तो वो आपसे पैसा मांगते हैं. इंडिविजुअल से भी मांगा जाता है, कंपनी से भी मांगा जाता है. इंडिविजुअल आपके ऊपर रैंसमवेयर अटैक नहीं होगा, टेंशन ना लो, कर लो. मतलब मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इंस्टॉल करना है, पर आपके ऊपर चांसेस नहीं है, क्योंकि उनकी भी बैंडविड्थ लग रही है, उनकी भी एनर्जी लग रही है. ये लोग क्या करते हैं, जैसी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करके चले तो उनका बहुत सेंसिटिव डेटा होता है. अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि बहुत सारी एडटेक कंपनियों के डेटा मार्केट में पब्लिश हो गए थे, बिक रहे थे, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, और बहुत सस्ते में बिक रहे थे. अब मुझे नहीं पता कि वो रैंसमवेयर के थ्रू आया था या इंटरनल टीम से लीक होके निकल के आया था, पर मार्केट में वो डेटा बाहर भी बेच सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज डाउन हो सकती है. तो इनका सजेशन ये है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करो. मेरा सजेशन ये है, अगर आप कंपनी हो तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करो. मैंने इंडिविजुअल के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता. सो अब हम जा रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ, और रैपिड फायर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक नए तरीके से इस वीडियो को प्लान किया है. थोड़ा सा मैं भी सीधा साधा लड़का लग रहा हूँ शर्ट वर्ट पहन के, तो थोड़ा फॉर्मल वे में मैंने वीडियो बनाने की सोची, पर साथ में हमने थोड़ा सा इनफॉर्मल भी रखेंगे. अभी मैं टीटी खेलूँगा और साथ में हम रैपिड फायर करेंगे, और मुझे नहीं पता कि मैं टीटी खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा. क्रिकेट की तरह खेलूँगा पक्का. चलो रैपिड फायर की तरफ चलते हैं. जस्ट बी क्विक in the rapid fire, not the game. Android or iOS? iOS. Funding or bootstrap? Wish is bootstrapped, but so have you raised money? Yes, we have almost 10 million. So what is your business model? Our business model is we build technology that protects the consumers, their privacy and their security, and sells those solutions to the corporates. So basically your service starts from what price? Suppose I want to hire you. Yeah. Can I hire you, or you are out of my budget? No, so at this point of time, we cater to the premium list of companies. Okay. Because again, more to do with the technology, bandwidth, etc., etc. But down the line, we will become even affordable, and we are trying to make it even as affordable to
every category. So what kind of resources do you have right now? The people we have are three sets. We have good cybersecurity researchers. Cybersecurity researchers, the ethical hackers, you can call them, the investigators, the curious ones who are very interested in finding and digging deeper into new hacks. That's a cybersecurity team. Second is the machine learning team. These are the teams who is trying to convert what the cybersecurity team is putting into a fully automated mechanism. The third team we have is the engineers, the people who combine the cybersecurity skills, the machine learning skills, and produce a product out of it, which we normally eventually sell. And then we have a lot of ecosystem of sales, marketing, content, operations, etc., etc. But this is like primarily the core. So you have any licensed technology like for encryption, decryption, or for security? Some technology that I can use as a SaaS for my product? Yeah, which is the Bivigil, right? It's free. It's free. Yeah, it's free. Every app on your phone, you would have 20, 30 apps. And each of the apps have access to your data, one or the other data. You are charging money from the apps? No, we don't charge anything from anyone for that. Okay. The objective of the product is to make sure consumers have a free tool to take care of their security. Okay, so basically you are showing your potential to the big businesses that you can do this. Yeah, it's a free version, by the way. It helps us obviously build our brand for sure, but the bigger intention is so that people have something free to take care of their security. So what is your favorite startup in India right now? So Zerodha is in the respect list is because what they were able to, the cash, everything you see around has been built out of profits. Your favorite destination? Switzerland. Have you visited there? Yes. तो बचपन में हमारा क्या होता था, कोई भी पूछता भाई फेवरेट डेस्टिनेशन, भाई स्विट्जरलैंड, कभी देखी नहीं जिंदगी में, मैंने आज भी नहीं, आजकल भी अभी तक नहीं देखी, पर उस टाइम पे कोई पूछता था भाई तू हनीमून पे कहाँ जाएगा, 5th क्लास का बच्चे से पूछ रहे हो हनीमून पे कहाँ जाएगा, और वो बता रहा है भाई स्विट्जरलैंड जाऊँगा, और देखा किसी ने नहीं होता था. क्या आपके साथ भी ऐसी स्टोरी थी क्या? नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताना. तो यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, मैंने फॉर्मल दिखा के इनफॉर्मल बातें करी है, पहले मैं इनफॉर्मल दिखा के थोड़ी फॉर्मल बातें करता था. तो क्या आपको अच्छा लग रहा है बताना जरूर. टॉप 5 एडवाइसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर. See, one, we are in a category that no one has built a large business out of India in cybersecurity. Not from Asia either, right? All the big companies are outside. So this is, when you first build a unicorn in edtech space, that's when people understand, well, there's a possibility, and they keep pouring money. But when there is nothing first, it is a struggle, by the way, right? You need to prove that it's possible to build a market in this space from this region. So be prepared for that and do enough research when you venture into it, because it's like an untoured territory you're going to go through. That's one. Two, always think from the perspective. The first perspective is, when you're putting together your team, always think from what and how you can make them successful, right? And if you have your team's success in mind, I always believe that team will work for the customer's success. And if the customer's success is taken by your team, the customer will give you financial success. And if the customer gives you financial success, then the investors will give you more financial success. And I think that's the path I would take. 3, one of the things I learned, over time is, don't try to solve everything with money. Try to be creative. And you, as a human species, right? We are creative. So there's always a solution which you might not know, but it's there out somewhere. You have to find. In the end, you have to have a purpose, right? If your purpose is to make an enormous amount of money, eventually, after a period of time, you will be wealthy, and then your motivation is going to die down. Right? In which case your company is going to die down as well. So you need to pick up something which you're super passionate about. You can get up every day, go work. And it's not in cybersecurity, every category, you're going to go work every day, because things are going to get hard. When you get hard, you can either give up or keep hustling. If you're passionate about that particular problem, you can keep hustling. So pick something you would love to do every day, even if you don't get paid. That's what you should. The last one is,
this is a long journey, right? I mean, don't get frustrated, when things don't work. Just enjoy the time you spend doing it, because then you will be happy. Because in the end, objective of life is to be happy. And if you can't be happy, then you better don't do it. So suppose I want to start a cybersecurity company by tomorrow. Yeah. So I have to work on 3 things that I think. One is the machine learning thing. I have to hire some professional on machine learning, some ethical hackers, and If you want to do a service business, you just need the cybersecurity people. Okay. If you want to build a product out of it, which is a scalable thing, you need to then convert that cybersecurity knowledge into engineering, as well as, and you need smarter engineering, then you need machine learning. So this is the journey. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मैं भी टीटी सीख गया हूँ और आप भी सीख गए हो साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैसे खोलनी है। हमने आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई है जिसके तरीके से मार्केट में आजकल हैकिंग चल रही है। साथ में अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आगे करियर बनाना चाहते हो तो आपको रिसोर्सेज वाले पाथ भी मिल गए हैं। कुछ जो इन्होंने रिसोर्सेज बना रखे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डाल दूंगा, आप सारे लिंक को चेक कर सकते हो। इन्होंने जितने टूल्स के बारे में बताया वो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका न्यूज़लेटर भी है। All the contents which we produce are free for the community, or most of the contents. Okay. Whether it's materials to learn, materials to tools to use, are all free for the community, so that their security, their awareness are getting increased day by day. थैंक यू। लाइक कर देना वरना कंप्यूटर हैक करवा दूंगा तुम्हारा, बता रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब भी कर देना, फिर रोगे अकाउंट से पैसा निकल गया। डिसलेक्सिया हो गया।